Hello, good afternoon to all of you. So welcome to the YouTube channel of YourPedia and PYQ. So I'm Sharma, your mentor mechanical engineering. जैसे कि आपको पता है लास्ट टू लेक्चर में अभी हमने फ्यूल मशीन एंड फ्यूल मैकेनिक्स ओके और दो आपके पास जो पार्ट था दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी आई कैन से HPCL JU है। अब आपके पास यहाँ पे आज के जो पर्टिकुलर क्लास में बात करने वाले हैं दैट इज HPCL ऑफिसर ओके ना। और हमारे पास यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम कवर अप करेंगे दैट इज रिलेटेड टू दी थर्मल इंजीनियरिंग पोर्शन अलोंग विद दैट थर्मोडायनामिक्स पार्ट ओके। कुछ पार्ट में आपके पास यहाँ पे आईसी इंजन का, कुछ आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें पावर प्लांट का और आपके पास थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड बात करने वाले ओके। तो आपके पास यहाँ पे क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको थर्मल से कंपेयर देता हूँ कि आपके पास एचपीसीएल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं कई बार बोल चुका हूँ ठीक है ना। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स है सब जो कंटेंट सब आपको मिलते हैं ओके। चाहे वो एचपीसीएल से आप से रिलेटेड आप प्लस हो या फिर जो रिमेनिंग केसेस है उनकी जॉब से रिलेटेड आपके पास ओके ना। तो अब आपके पास यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो कवर अप करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज आपके पास यहाँ पे। देन हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन ओके। अब आपके पास यहाँ पे वॉइस इज नॉट क्लियर, एक बार कंफर्म करो वॉइस ठीक है बिल्कुल कि नहीं है। एक बार कंफर्म करना आपके पास यहाँ पे वॉइस ठीक है नहीं है। नॉट क्लियर यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस गिव मी अ सेकंड। जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। Hello. Hello everyone. Am I audible to all of you now? Okay. So I was just saying that in today's class we have to cover up the previous year questions as well as the practice question related to the thermodynamics here. Along with that, we are going to see the thermal engineering portion. Okay. In the thermal engineering part, we are going to see the subject related to the power plant, IC engine as well as the RAC part here. Okay. So that was our main motive. So before any delay here, so let us start our lecture question series here. So here you can see the first questions are going to be a previous year questions here. The first part is the performance of a steam cycle in a power plant is compared with the standard processes of Rankine cycle, Carnot cycle, air standard and constant pressure cycle. Okay, so this is specifically related to the power plant here. Okay, so, or I can say the thermal power plant. In that case, you already know that generally the cycle which is generally used for the comparison purpose is known as the Rankine cycle, and that is a very simple part here. Okay, now you can directly mark the question that it is a Rankine cycle here. Now coming back to the next question. At a constant pressure, heat energy of 1800 joules supplied to a 2 kg of fluid, which causes a rise in temperature of 15 degrees Celsius. Now, what will be the average specific heat of the fluid will be? Okay. Now, just see in this question. First of all,
you can expect some of the numerical questions here in the officer exams, okay, because the level of the question is a little bit high as compared to the JEU. In JEU, we are going to see only the theoretical portion, and I can say 5 to 10% you can expect the numerical, which are very, very simple. But in this case, the level of the numericals are going to be a little bit difficult here as compared to the officer part, okay, but they are going to be directly formula based here. Now in this question, what is given to us? We have been provided with a heat energy of 1800 joule, okay, and the corresponding mass of the fluid given to us is equal to 2 kilogram. Now, due to the heat supplied into the fluid, what is happening here? The temperature rise is observed of 15 degrees Celsius. So correspondingly, what do you want to find out? You want to find out the value of the specific heat of the fluid. अब आपके पास specific heat का मतलब यहाँ पे होता क्या है? So it is representing the amount of the heat which is required to raise the temperature by 1 degree Celsius of unit mass here. Okay, now so you can see in the case of a compressible substance, we have a different values of specific heat like Cp here and Cv at a constant pressure and at a constant volume here. But in the case of an incompressible fluid, the Cp and Cv values are going to be remain same here. Okay, yeah. So here in this case, you can directly use the formula of the sensible heat here, that is Q equal to mc delta T, and after putting all the values, you can simply calculate the values of the C here. So here I can say Q is given to us at 1800, mass is 2, and the corresponding temperature rise is 15 degrees Celsius. Remember that whenever the temperature difference is given here, you don't need to convert it into the Kelvin here. Okay ना? तो आप यहाँ पे जब टेम्परेचर डिफरेंस की जब भी हम बात करते हैं, कभी भी आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, because you are going to get the same temperature difference here. So now in this case, if you just solve it, you are going to get the answer is coming out to be 60 degrees Celsius here. Sorry, 60 kilojoule per kg Kelvin here. So that is going to be the correct answer in this case. So I can say option number B is going to be the correct answer. It is joule here now. Now coming back to the next part, the concept of the internal energy is discussed in the second law of thermodynamics, zeroth law, third law of thermodynamics, first law of thermodynamics here. Just remember that there are 4 laws of thermodynamics which is covered in the thermodynamics. Zeroth law provides you the concept of a thermal equilibrium. First law provides you the concept of a internal energy. Second law provides you the concept of a entropy part, and the third law tell us about the 0 Kelvin temperature here. Okay now. So in this case, the concept of internal energy comes under the category of a first law of thermodynamics here. So option number D is going to be the correct one. Next part. The absolute temperature scale needs only one fixed point, which is the normal body temperature, boiling point water, melting point of the ice, triple point of the water here. Now just see, in the class also I have explained, I have repeated again many times here, that you can define your own temperature scale, and while defining the temperature scales, we have a certain fixed points here. The first one is the ice point, which is a 0 degrees Celsius. Then we have a steam point, 100 degrees Celsius, triple point, okay, which is generally used to define the 1 Kelvin of a temperature also. Along with that, we are having a oxygen point, sulfur point, gold point. All of those you have to remember here. Okay, no issue है. तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर विल बी द करेक्ट आंसर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर क्या होता है आपके पास? बेसिकली ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों की तीनों फेज क्या होंगे? कोएग्जिस्ट आपके पास यहाँ पे करते हैं, चाहे हम बात करें सॉलिड, लिक्विड या फिर आपके पास गैसियस फेज की. अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करोगे, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, टेम्परेचर एट द ट्रिपल पॉइंट, इट इज अराउंड 0.01 डिग्री सेल्सियस. ये ध्यान रखना. अगर आप यहाँ पे प्रेशर की बात करते हो, प्रेशर इज गोइंग टू बी 0.61 किलो पास्कल हियर, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू बी 0. क्यों 0 आपके पास यहाँ पे होगी? बिकॉज इस केस में इस पॉइंट को आप वेरी नहीं कर सकते. ये ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट पार्ट. The term H minus Ts in driving the maximum work done for a steady flow system is going to be known as Bender function, Rankine function, Helmholtz function, and Gibbs function here. Now just see, I have told you that the amount of the maximum work done which you can extract from a certain heat input when the system is coming into the dead state here. Okay, now that maximum amount of work is known as the availability here. Now
while you study the available energy portion here, there are two important functions which is known as the Gibbs function and the Helmholtz function. So these two functions are they are generally used in the chemical engineering here, okay, and they are related to the different criteria, that whether the pressure equilibrium condition is maintained here or whether the pressure and temperature both equilibrium conditions are maintained here. When we talk about the Gibbs function is defined as the H minus Ts here, where H is representing the enthalpy, T and S is representing the temperature and entropy here. But if we talk about the Helmholtz function, it is having a formula of F is equal to U minus Ps here. So remember these two formulas, these are very important here. And there is no numerical, numerical is not going to be asked from this particular part here. They are going to ask just I can say the definition of this function. Along with that, they are going to ask you the simple formula here. Okay, so option number D is going to be the correct answer here. Next part. Now in this case, if you just see, the perpetual motion machine of the first kind is impossible. This statement is a corollary of second law of thermodynamics, thermodynamics zeroth law, third law of thermodynamics and first law of thermodynamics. अच्छा, आपके पास यहाँ पे perpetual motion machine का मतलब क्या था? Perpetual motion machines are those machine which basically violates the laws of thermodynamics here. तो आपके पास यहाँ पे जनरली दो तरह के perpetual motion machine स्टडी करते हो. Here we have a PMM1 here, and here we have a PMM2. So PMM2 is basically violating the second law here, and if we talk about the PMM1, it is violating the first law of thermodynamics here. Okay, so I can say the perpetual motion machine of the first kind is impossible according to the first law of thermodynamics here. Okay, अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अब आपके पास ये जो मैं क्वेश्चन अभी कवर अप कर रहा हूँ, दैट्स आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हियर. ओके, ये भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू नहीं करे हैं. So you can see the level of the question till now. It's very simple here, and I am not going to cover all the PYQs here. Okay, just a few PYQs I have taken from the last year papers. Next question: a reversible engine with 25% efficiency operates with a higher temperature of 127 degrees Celsius than the sink temperature is going to be. Okay, so here we have a reversible engine. And we know that reversible engine operates on the Carnot cycle here. And Carnot cycle is having a maximum efficiency, which is basically a function of temperature limits only. So you can see efficiency of a Carnot cycle is going to be 1 minus lower temperature upon higher temperature. And efficiency is given to us as 0.25, and correspondingly lower temperature we have to calculate. Higher temperature is given to us 127 plus 273 here. Okay, this is the value you are going to see. So I can say the value of the TL is coming out to be TL by 400, it equal to 0.75, and correspondingly TL will be equal to 300 Kelvin here. Okay, 300 Kelvin means it is equal to 27 degree Celsius. So how much will be the answer here? Option number D will be the answer here. 27 degree Celsius will be the correct answer in this case. Okay. Next part, a system in which the energy or matter flows into or out of the system is called as the. Okay, now just see, question based on the simple definition of the system here. We know that whenever we talk about the system and surrounding, they are characterized on the basis of the energy interaction. Okay, the ways by which the energy interaction is taking place. So generally there are three different ways by which we can classify the system. First is the work, second is the heat, and the third is the mass here. So when both work and heat transfer is taking place, then we can say it is a closed system. Okay, when all the three modes of interaction is taking place, then we say it is an open system. And when there is no mode of energy interaction, then we say it is an isolated system here. Okay, so correspondingly, if energy or matter both is flowing in or out of the system, we may have an open system here. And all the practical devices which you used in your day-to-day life comes under the category of an open system only. ठीक है ना? ये तो बिल्कुल सिंपल सा केस है, कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं. चलो, नेक्स्ट पार्ट. A tank carries an idle gas at an absolute pressure of 4 bar and 27 degrees Celsius. If
the temperature is increased to 60 degrees Celsius here, what will be the pressure inside the tank here? Now just see, in this case, first of all, you are dealing with a tank. एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स के किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी के ना हो, ठीक है ना, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास हिंट होते हैं कि हम कौन सी प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं. देयर इज अ हिंट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दैट व्हाट प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू यूज in the thermodynamics here. Okay na? So here you can see we have a tank here which can be considered as a rigid tank. So in that case, no matter how much heat you supply or how much heat you may take, the volume is not going to be changed. So I can say if the properties inside the tank are changing, so it is taking place at a constant pressure. So if I assume that it is a constant pressure process, yes, 4.44 bar is the correct answer here. 4.44 is the correct answer here. So here you can see volume is pressure is going to be directly proportional to temperature here. So I can say P2 by P1 is equal to T2 by T1 here. Now you have to calculate the value of the P2. Initial pressure is given to you as 4 bar. Final pressure is given to us as 60 degrees Celsius, which is equal to 333. And initial temperature is 300 Kelvin here. Okay. So just solve it and you are going to see that value of the P2 is coming out to be around 4.44 bar. This is the answer you are going to see here in this case. Okay. Next question. In a diesel cycle, the heat is supplied during compression from the external source. Yes, what can be the answer here? A very simple question is there. And we know that in the case of in the case of diesel cycle, the heat transfer is taking place at a constant pressure. Okay. And in the case of an Otto cycle, the heat is transferring at a constant volume process here. Okay now? Okay, so that's the last question of the PYQs here. Then we are going to see the practice question. Dual cycle is one in which the heat is supplied at constant volume, constant pressure, isentropic compression, isentropic and adiabatic compression, constant volume and isentropic expansion. If you don't know the dual cycle here, you can directly mark this mark the correct option, but just by looking the words here. In all the other options, we are dealing with the isentropic, adiabatic and isentropic. Here again an isentropic. In the case of isentropic and adiabatic, there can't be any heat transfer here. Okay, so we are only left with the option number A. And you should know that in the case of dual cycle, we are having two processes in which we are supplying the heat. And the representation of the dual cycle is it is in this form here. So first you are going to have the constant volume heat addition, then you are going to see constant pressure heat addition here. Okay now? So option number A is going to be the correct answer. Now let us start with the first question here. Okay. Now tell me the answer here. During an adiabatic process, the increase in volume is associated with. क्या होता है आपके पास यहाँ पे? अगर आप एक adiabatic process carry out कर रहे हो तो increase in volume करने से क्या होगा आपके पास यहाँ पे? Yes, tell me the answer now. And also mention me the question numbers also here. Okay ना, question number भी जरूर mention करना आपके पास यहाँ पे. Adiabatic process के केस में क्या आपको देखने को मिलेगा? Why there is an increase in why there is a decrease in pressure and decrease in temperature? Pressure और temperature decrease क्यों हुआ? If you have a expansion process here. See, we know that in the case of an adiabatic process, the properties are related in this relation here. T2 by T1 is equal to P2 by P1 to the power gamma minus 1 upon gamma equal to V1 minus V2 to the power gamma minus 1. Okay. So now I can say temperature and pressure both are inversely proportional to the volume. So if the volume is increasing, both temperature and pressure are going to be decreased here. And you should know that the expansion process is basically a decrease in pressure. It will going to result in decrease in pressure as well as decrease in the temperature also. Okay, so option number A is going to be the correct answer here. Next, in a gas turbine cycle, due to the intercooling, what is happening here? Mean temperature of heat addition is going to decrease. Mean temperature of heat addition is going to increase. Compressor exits
compressor exit air temperature is going to be increased here. B is not a correct answer here. B is not a correct answer. B is wrong. B is wrong here. Just see, we are talking about the gas turbine power cycle, and we are performing a intercooling process here. Okay, we are performing an intercooling process. Why do we use the intercooling? In order to reduce the compressor work. So if you just see, in the case of a gas turbine power plant, the cycle is represented in this form. Okay, this is a simple representation of a gas turbine cycle. Here we are going to have first compression process, then we have a constant pressure heat addition process, then we have expansion process, and then we have a heat rejection process here. Now if you are performing the intercooling, in that case what is going to happen? Here you will observe that intercooling is going to be performed in this way. Okay, so let us suppose here we have point number 1, here we have point number 2, 2 dash, here we have 3 dash, and here we have 4 dash. Okay, so in the previous cycle, when there is no intercooling, the heat addition is taking place from 2 to 3 here. But after the intercooling, the heat addition is taking place from 4 dash to 3 here. Okay, or you can see now the heat addition is taking place at a lower temperature as compared to the earlier case. Okay, so if I just calculate the value of the mean temperature of heat addition, you are going to observe the mean temperature of heat addition is going to decrease at a faster rate as compared to the mean temperature of heat rejection. Okay, mean temperature of heat rejection is also going to be decrease here, but by a very small amount. But if we talk about the mean temperature of heat addition, it is going to be fall at a very fast rate, due to which you are going to observe that if I just compare the efficiency with the intercooling, you are going to see the mean temperature of heat addition is getting decreased by a very large amount, and mean temperature of heat rejection is decreasing by a small amount here, which will correspondingly increase this negative term, which will further decrease the efficiency of the gas turbine power plant. That is why we say that efficiency also decreases due to the intercooling here. Okay, in the case of gas turbine power plant here. Remember that part. So option number A is going to be the correct answer in this case. Okay, option number A is going to be the correct answer. अच्छा, हिंदी में आपके पास एक्सप्लेन करना है यार. चलो ठीक है, हिंदी में कर देते हैं आपके पास यहाँ पे. अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A paddle wheel is installed in a rigid insulated tank containing 10 kg air. CV value is given to you 0.718. A torque of 100 Newton meter is applied on the paddle wheel to rotate it at 60 revolution per minute for 2 minutes. At the end of this process, what will be the increase in temperature of the air? क्या होगा आपके पास इसका आंसर? बता सकते हो? What can be the answer here? So what is given to us? We have a container here, a paddle wheel. A paddle wheel work input is going to be there. Okay, and now you can see the wheel is rotating with a speed of 60 rpm. जो wheel है वो 60 rpm पे rotate आपके पास यहाँ पे कर रहा है, and by the rotation of the paddle wheel आप क्या कर रहे हो? वर्क इनपुट दे रहे हो सिस्टम के अंदर. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, it is an insulated tank. So you are going to see कि आपके पास सिस्टम से सराउंडिंग में किसी तरह का हीट ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो सकता. तो मतलब आपके पास अगर मैं फर्स्ट लॉ को अप्लाई करता हूं, dq इक्वल टू du प्लस dw, you are going to see dq is going to be 0 and minus dw, it is going to be equivalent to du. ओके, तो जो आप कोई भी वर्क इनपुट दे रहे हो सिस्टम के अंदर, वो क्या कर रहा है बेसिकली? वो आपके पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है आपके पास यहाँ पर. Okay, so you have to calculate that what is the amount of work input to the system and how much internal energy has been increased here. Work input कैसे calculate करोगे आप यहाँ पे? 10.5. Yes, 10.5 is the correct answer here. 10.5 सही आ रहा है. तो अगर आप यहाँ पे वर्क इनपुट को देखते हो, तो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, वर्क इनपुट इज गोइंग टू बी
torque into theta here. So here I can say torque into omega into time here. So torque of 100 Newton meter is applied. What is the value of omega? So now you can see the paddle wheel is rotating with a speed of 60 rpm. So I can say the value of the omega will be 2 pi into 60 by 60 multiplied by 2 into 60 here. So that is a time in second. So if you just solve it, you are going to get the value of the work here. Okay, तो ये जो भी वर्क है या इनपुट दे रहे हो सिस्टम के अंदर, ध्यान रखना. Now I don't know the value of the work done here. किसी ने निकाल लिया वर्क की वैल्यू? वर्क की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? W की वैल्यू. Just tell me the value of W. M into CV into temperature change. Okay, it is going to be equivalent to work input here 75.4. Okay, so I am taking the work as negative because it is input to the system here. So अगर आप इसे solve करोगे, if you just solve it, you are going to get the answer as 10.50 degree Celsius here. So option number C is going to be the correct answer in this case. Okay, now next part. Saturated liquid water is slowly heated at a constant pressure of 200 kilopascal to a final state where its quality reaches 0.65. For water at 200 kilopascal, the saturation temperature is given to you, the value of the HF is given to you, value of the Hg is given to us. Okay, what do we need to find out? We want to find out the value of the specific entropy here. Specific entropy. So now just see here. What is happening here? So first of all, if I simply draw the PV diagram, temperature entropy diagram, sorry. तो अगर आप temperature entropy diagram बनाते हो, so you are going to see the dome in this way. In this particular dome, the constant pressure lines are going to be represented by this way here. Okay, तो अब आपके पास आप initially इस point number 1 पर हो and you are moving from 1 to 2 here. Okay, you are moving from 1 to 2. So you want to calculate that what is the value of the change in specific entropy. S2 minus S1 you have to calculate. Okay, so now what is the value of the S2 minus S1? S2 minus S1, just see, क्लास में मैंने आपको क्या बोला है कि अगर आपके पास कोई सबस्टेंस है कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वो हीट को एब्जॉर्ब या हीट को रिजेक्ट करता है, in that case entropy is going to be equivalent to simply the amount of heat transfer H2 minus H1 divided by the temperature at which it is taking place. Okay, it is going to happen here. Now in this case you are going to see we need to find out the value of the H2 minus H1 here. So here H2 is going to be equal to H1 or HF plus X into Hg minus HF here, and correspondingly I can write H2 minus H1 or HF is equal to X into Hg minus HF here. Okay, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास S2 minus S1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास यहाँ पे 0.65 multiply by 504.68 divided by 120.23 plus 273 here. Okay, so if you just solve it, you are going to get the value of the entropy change. क्या आंसर आ रहा है आपके पास यहाँ पे? What is the value of the entropy here? So you are going to see the value of the entropy is coming out to be around 3.64. So option number D is going to be the correct answer here. Okay, option number D आपके पास यहाँ पे correct answer रहेगा. Next part, the equation TDS is equal to DU plus PdV. It is applicable for which processes and for which system here. अब थोड़ा ध्यान रखना. In thermodynamics, you have first law of thermodynamics written in this way.
ओके, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो मैंने सेकंड एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर, सेकंड एक्सप्रेशन में जो राइट हैंड साइड है इट इज रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ द सिस्टम हियर। आप किस सिस्टम से डील कर रहे हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट टर्म हियर। एंड इक्वेशन किस प्रोसेस के लिए लिखी हुई है, इट इज रिप्रेजेंटिंग बाय द सेकंड इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे बात करें du, if du is mentioned that means we are dealing with a closed system, if the pdv is mentioned that means we are dealing with a reversible process here, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हो TDS इक्वेशन की, सो हियर वी हैव टू TDS इक्वेशन, दो TDS इक्वेशन आपके पास यहाँ पे होती है। TDS is equal to du plus pdv and next one is TDS is equal to dh minus vdv। अब ध्यान रखना आपके पास यहाँ पे ये दोनों की दोनों इक्वेशंस आप किसी भी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज इस इक्वेशंस के अंदर सारी की सारी जो टर्म्स हमारे पास होती है वो किससे डील कर रही है, वो आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आपके पास यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, आपके पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन हम जो मेंशन करते हैं इट इज स्पेसिफिकली रिटन फॉर द क्लोज सिस्टम। सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू सी आपके पास यहाँ पे इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोसेसेस व्हिच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ क्लोज सिस्टम। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पार्ट, a heat pump which operates in a cycle extract the heat energy from the cold reservoir and supply the same amount of energy to the hot reservoir without any external work done, without any external work input here. Which of the following statements hold for this process here? So आपके पास यहाँ पे एक सिंपल सा हीट पंप है। ये हीट पंप क्या कर रहा है आपके पास यहाँ पे, ये हीट पंप लो टेम्परेचर से आपके पास हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है और आपके पास यहाँ पे हाई टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप किसी भी तरह का वर्क इनपुट यहाँ पे नहीं दे रहे हो, ठीक है। विदाउट एनी वर्क इनपुट इट इज ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर सिंक टू द हाई टेम्परेचर सोर्स हियर। सो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं आपके पास फर्स्ट लॉ अप्लाई करता हूं, फर्स्ट लॉ अगर आप अप्लाई करोगे यहाँ पे यू आर गोइंग टू सी नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क डन। नेट हीट क्या हुआ, बेसिकली हीट एब्सॉर्ब माइनस हीट रिजेक्शन इक्वल टू नेट वर्क विच इज इक्वल टू 0 हियर। ओके, सो यू कैन सी QA और QR क्या होगा मेरे पास, सेम होगा। दैट मीन्स it is satisfying the first law of thermodynamics, but according to the second law of thermodynamics ये एक feasible process नहीं है, because heat transfer क्या है आपके पास यहाँ पे, heat transfer एक spontaneous process होती है आपके पास। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का, spontaneous process का मतलब है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन पे आपके पास कैरी आउट हो। तो हम कह सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दैट केस वी कैन से इट इज वायलेटिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हियर। So option number C, this process violates the second law but not the first law of thermodynamics here. ये ध्यान रखना। So option number C is going to be the correct answer in this case. Next part, a reversible heat engine is shown in the figure below. Its thermal efficiency is going to be okay. अब देखो आपके पास यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इंजन की, दैट इज डीलिंग विद थ्री रिजर्वायर्स है। ओके, 3 रिजर्वायर से ये डील आपके पास यहाँ पे कर रहा है। अब इस केस में अगर हम बात ओके, आपके पास में यहाँ पे क्या बात कर रहा था कि अगर आपके पास कोई भी इंजन है जो मल्टीपल रिजर्वायर से डील आपके पास यहाँ पे करता है, इन दैट केस आपको यूज करना पड़ता है फर्स्ट लॉ, अलोंग विद दैट आपको यूज करनी पड़ती है क्लॉसेस इनइक्वालिटी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके पास ये जो इंजन है ये आपके पास Q1 एंड Q2 अमाउंट ऑफ हीट को आपके पास क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। Q3 अमाउंट ऑफ हीट को ये आपके पास यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। इन दैट केस यू आर गोइंग टू सी द सम वर्क इज आल्सो गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड हियर। सो अगर आप यहाँ पे सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करते हो, फर्स्ट लॉ को अगर आप अप्लाई करते हो, यू विल सी net heat transfer that is Q1 plus Q2 minus Q3 is going to be
इक्वल टू W, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेकेंड लॉ को अप्लाई करोगे, अच्छा अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम सेकेंड लॉ या क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी को डिफाइन करते हैं, क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी को, यू आर गोइंग टू सी दैट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t is going to be equal to 0, और आई कैन राइट आपके पास प्लस q1 अपॉन t1 प्लस q2 अपॉन t2 माइनस q3 अपॉन t3 इज इक्वल टू 0 देयर। ठीक है, यही आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो यू विल फाइंड Q1 की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 100 किलो जूल, टेम्परेचर दे रखा है आपके पास 1000 के इक्वल, Q2 की जो वैल्यू है दैट इज अराउंड 50 एंड T2 इज अराउंड 500। Q3 आपको नहीं पता, क्योंकि Q3 अगर आप जब निकालोगे तभी आप यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हो, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एफिशिएंसी आल्सो। So we have to find out the value of the Q3 here. Okay, so you can see Q3 की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी that will be equal to 300 multiply by 0.1 plus 0.1 here. So correspondingly answer will come out to be as 60 kilojoule here. Okay, 60 के इक्वल आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसको पुट करता हूँ, you will find कि आपके पास Q1 जो आ रहा है इट इज इक्वल टू 100, Q2 की वैल्यू आपके पास 50 है, Q3 इज कमिंग आउट टू बी 60 एंड इट इज इक्वल टू नेट वर्क आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम। ओके, एंड कोरस्पॉन्डिंगली 90 किलो जूल विल बी द नेट वर्क आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम हियर। सो 90 किलो जूल का आपके पास नेट वर्क प्रोड्यूस होगा जो कि आप ये इंजन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, ये ध्यान रखना। सब इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं आपके पास एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू W by Q हियर। W इज 90, आपके पास Q की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हियर। ठीक है, क्योंकि यही आप हीट ऐड कर रहे हो यहाँ पर। ओके, तो अगर हम इसे सॉल्व करें यू विल फाइंड कि आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी नियरली अबाउट 60% हियर। So option number C is going to be the correct answer in this case. Next part, if a gas of volume 6000 centimeter cube and pressure of 100 kilopascal is compressed quasi-statically to PV to the power 2 equal to constant until the volume become 2000 centimeter cube, then what will be the work done here in this case? अब आपके पास यहाँ पे आप एक चीज देखो, हमारे पास जो प्रोसेस कैरी आउट हो रही है वो कौन सी प्रोसेस है, वो एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। ओके, ये एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आपके पास गिवन है, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क आउटपुट जो होता है इट इज इक्वल टू P इनिशियल P फाइनल V फाइनल अपॉन n-1। इसके इक्वल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इनिशियल प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 100, इनिशियल वॉल्यूम की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल टू 6000, फाइनल प्रेशर यू डोंट नो, फाइनल वॉल्यूम इज 2000 हियर, फाइनल वॉल्यूम इज 2000 हियर। सो आई कैन से pressure into volume square is equal to pressure into volume square. ओके, सॉल्व करोगे यू विल फाइंड कि जो आपके पास आंसर आएगा इट इज कमिंग आउट टू बी अराउंड हाउ मच आंसर यू आर गेटिंग हियर, 100 into 9 divided by 4 here. That is answer you are going to see. So I can say the pressure will come out to be as 225 bar here. Okay, प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास यहाँ पे 225 के बार के इक्वल आपको देखने को मिलेगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, 100 किलो पास्कल है ना आपके पास प्रेशर। ओह सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 नहीं है ना, 0 है यहाँ पर, सॉरी 1 है यहाँ पर। सो यू आर गोइंग टू गेट 900 किलो पास्कल हियर, नॉट बार, 900 किलो पास्कल हियर, बिकॉज वी आर हैविंग अ यूनिट ऑफ प्रेशर एज किलो पास्कल हियर इन दिस केस। चलो
अब अगर आप इस वैल्यूज को पुट करते हो यहाँ पे, यू कैन सी इनिशियल प्रेशर इज 100 किलो पास्कल, वॉल्यूम इज गिवन टू अस एज 600 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस pressure is given to us 900 kilo pascal, final volume is 2000 divided by 2 minus 1. ओके, सॉल्व करो और आपके पास यहाँ पे यूनिट को बैलेंस अगर आप करोगे, यू विल फाइंड कि आपके पास जो आंसर आ रहा है इसका, दैट इज कमिंग आउट टू बी -1.2 किलो जूल। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है आपके पास यहाँ पे, तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सो आपके पास ऑप्शन नंबर जो बी होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस हियर। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर इन दिस केस हियर। नेक्स्ट पार्ट, फिगर बिलो शो अ स्टीम प्लांट विद अ प्रोसेस हीटर। विद अ प्रोसेस हीटर, प्रोसेस हीटर का मतलब क्या हुआ, द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम थ्रू द बॉयलर इज गोइंग टू बी। अच्छा, अब देखो आपके पास एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम गिवन है, ठीक है, सिंपल थर्मल पावर प्लांट का, जिसमें आपके पास एक प्रोसेस हीटर लगा हुआ है। प्रोसेस हीटर का सिंपल सा मतलब है जो भी आपके पास हीट हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो आप, ठीक है, चाहे आप शुगर मिल इंडस्ट्री में यूज करो, चाहे पेपर मिल इंडस्ट्री में यूज करो, वो प्रोसेस हीट हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब इस केस में हम यहाँ पे जैसे मान लो आप देखोगे तो हमारे पास मास फ्लो रेट दे रखा है कि जो W अमाउंट ऑफ फ्यूल है या आपके पास स्टीम है वो बॉयलर से पास हो रही है। ओके, तो आपके पास जब W आपके पास एंटर कर रहा है टरबाइन में, तो टरबाइन में से आप W1 माइनस W1 को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, किस चीज के लिए, प्रोसेस हीटर के लिए, और जो रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर है दैट इज W माइनस W1, इसको आप यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, कंडेंसर में आप ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, तो आपसे पूछा हुआ है कि हमारे पास इस W की वैल्यू क्या होगी, दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू, इस W की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या होने वाली है। तो अगर हम इस केस में देखें आप कैसे निकाल सकते हो, एक चीज चेक करो, W1 अमाउंट ऑफ जो स्टीम है वो प्रोसेस हीटर से होते हुए पंप के अंदर जाके नंबर 7 पॉइंट पर आपके पास रीच करेगा, ठीक है। जो रिमेनिंग स्टीम है W माइनस W1 वो आपके पास कंडेंसर के थ्रू, पंप के थ्रू होता हुआ पॉइंट नंबर 5 पे रीच करेगा, ये ध्यान रखना। और आपके पास यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो स्टीम्स है ये दोनों आपके पास नंबर 8 पे जाके टोटल फ्लो रेट को आपके पास रीच यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाता हूँ इस छोटे से रीजन के ऊपर, पॉइंट नंबर ए के ऊपर मान लो, तो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि हमारे पास W1 अमाउंट ऑफ स्टीम है एट पॉइंट 7 विद अ कोरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी ऑफ H7 हियर। पॉइंट नंबर 5 पर जो स्टीम है दैट इज W माइनस W1 मल्टीप्लाई बाय H5। सो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी एट द इनलेट ऑफ द पॉइंट नंबर ए, या फिर टोटल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग हियर, ठीक है, ये ध्यान रखना, टोटल एनर्जी बिफोर द मिक्सिंग हियर। अब ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ये आपके पास इक्वल होगा W मल्टीप्लाई बाय H8 के इक्वल यहाँ पर ये होना चाहिए, ये आप ध्यान दोगे, ठीक है, ये H8 के इक्वल आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो इस फर्दर इक्वेशन को, यू विल फाइंड कि आपके पास ये वैल्यू आ रही है W1 H7 माइनस H5 इक्वल टू W H8 माइनस H5 है। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम सॉल्व करें तो W की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू W1 H7 माइनस H5 डिवाइडेड बाय H8 माइनस H5 है। ओके, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच यहाँ पे कर रहा है, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है आपके पास यहाँ पे, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फ्रेम होता है स्कीमेटिक डायग्राम से रिलेटेड तो जस्ट आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, दैट्स इट, देन यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर हियर। ओके, इजीली आप आंसर को यहाँ पे
देख लोगे आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सबसे पहले कंप्रेसर का मेन काम क्या है? कंप्रेसर का मेन काम है प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करना, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारे पास एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। सो यू आर गोइंग टू सी कंप्रेसर जो है वो एंथैल्पी को इंक्रीज करता है, सो वी कैन से इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर 2। इवेपोरेटर आपके पास रेफ्रिजरेटर्स में आप यूज करते हो, इसका मेन काम क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करना एट अ कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपके पास इवेपोरेटर में हीट एब्जॉर्ब करने से एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज आपके पास यहाँ पे होती है। सो वी कैन से इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर 3 हियर। एंथैल्पी इंक्रीजेस बट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट हियर। ओके। थ्रोटल वाल्व, थ्रोटल वाल्व आप यूज करते हो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। थ्रोटल वाल्व का मेन काम आपके पास यहाँ पे होता है एंथैल्पी को कांस्टेंट रखना, साथ में प्रेशर एंड टेम्परेचर को रिड्यूस करना। सो वी कैन से इट इज मैचिंग विद द पॉइंट नंबर 1 हियर। कंडेंसर, कंडेंसर अगेन आपके पास एक हीट रिजेक्शन डिवाइस है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे ऑपरेट करता है। सो वी कैन से इट इज डिक्रीजिंग द एंथैल्पी ड्यू टू द हीट ट्रांसफर हियर, ओके, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1, 4 is going to be the correct answer here. Okay, option number A will be the correct answer here. Next part, a rigid tank contains 9 kg of air at 140 kilopascal and 20 degrees Celsius. More air is added to the tank until the pressure and temperature rises to 250 kilopascal and 30 degrees Celsius here. The amount of air which has been added to the tank. ओके, क्या गिवन है आपके पास इस क्वेश्चन में? आपके पास एक रिजिड टैंक गिवन है यहाँ पर, जिसके अंदर मास जो है वो 9 केजी है, इनिशियल मास 9 केजी है। इनिशियल प्रेशर आपके पास गिवन है यहाँ पे 140 किलो पास्कल। इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 293 केल्विन। अब आपने क्या करा? आपने इसमें एडिशनल मास ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास यहाँ पे जो M2 है दैट इज द फाइनल मास है। तो आपके पास यहाँ पर मास एंटर्ड क्या होगा? मास एंटर्ड विल बी फाइनल मास माइनस इनिशियल मास है। ओके, चलो अब देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये चेक करो कि इस पूरे के पूरे कंटेनर का वॉल्यूम क्या था, बिकॉज जब आप मास ऐड करोगे देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम हियर, बिकॉज आप किससे डील कर रहे हो? एक रिजिड टैंक से डील कर रहे हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मैं सिंपल से वॉल्यूम को कैलकुलेट करता हूँ, इट विल बी इक्वल टू mRT1 अपॉन P1 हियर। सो मास इज 9 kg, R is 0.287, temperature is 293 and pressure is 140 kilopascal here. तो ये आपके पास क्या प्रोवाइड करेगा? ये इनिशियल वॉल्यूम को प्रोवाइड आपके पास यहाँ पे करेगा। अब इस इनिशियल वॉल्यूम की जो वैल्यू आ रही है दैट इज अराउंड 5.41 मीटर क्यूब। चेक करना आपके पास यहाँ पर ये वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा इस केस में। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ? जब आपने मास को ऐड कर दिया, ड्यू टू द एडिशन ऑफ मास एनर्जी इंटरेक्शन भी आपके पास हुआ, तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों ही हमारे पास क्या होंगे? चेंज करेंगे। बट आपके पास वॉल्यूम में किसी तरह का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो वी कैन से फाइनल मास कैन बी रिटन एज M2 is equal to P2V2 divided by RT2। ओके, तो आप देख सकते हो फाइनल प्रेशर इज 250 किलो पास्कल, टेम्परेचर इज 303 केल्विन हियर, R is 0.287 and temperature is volume is 5.41 na, temperature is 303 here. So if you just solve it, you are going to get the final mass inside the container and which will come out to be around 15.55 here. Okay, तो ये आपको देखने को मिलेगा। So you can see अब आपके पास यहाँ पे जो मास है फाइनल मास दैट इज 15 kg, पहले कितना था? 9 kg के अराउंड आपके पास यहाँ पे था। सो वी कैन से आपने कितना मास ऐड यहाँ पे करा होगा? आपने 6.54 kg के आसपास
जो मास है वो ऐड इस सिस्टम में करा है। सो ऑप्शन नंबर अगेन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। चलो नेक्स्ट पार्ट, a pure substance having a CV equal to 0.733 undergoes a reversible process in which its temperature increases linearly from 40 degrees Celsius to 85 degrees Celsius and its specific entropy increases by 600 joule per kg Kelvin. What will be the work done by the system? Okay, what will be the work done by the system? क्या हो सकता है वर्क डन, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इसे? तो अगर मैं आपके पास यहाँ पर एक सिंपल सा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम शो करता हूं, आप यहाँ पे देखोगे इनिशियली आपके पास जो टेम्परेचर है दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, और ये आपके पास लगातार इंक्रीज कर रहा है। Why I am drawing a straight line? Because it is linearly increasing here. Okay. So point number 2 पे pressure is around 85 degrees Celsius. And correspondingly entropy change आपको जो देखने को मिलेगा that will be around 600 joule per kg Kelvin here. That is the value of the entropy change here. Okay. अब एक चीज देखो, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के अंडर जो कर्व हमारे पास होता है या जो आपके पास एरिया जो आपके पास यहाँ पर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो एक तरह से यहाँ पर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को कैलकुलेट करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं आपके पास अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करता हूँ, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड को अगर आप देखोगे 313 प्लस आपके पास 358, ओके, ध्यान रखना 40 डिग्री सेल्सियस 85 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ये क्या लिखा है मैंने आपके पास? जस्ट अ सिंपल एप्टीट्यूड, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये, ठीक है। सॉल्व करोगे यू विल गोइंग टू सी द अमाउंट ऑफ द हीट एडिशन। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? अराउंड ये आ रही है 201 के आसपास, 201.3 के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अगर हम देखें कि आपके पास इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, सो यू आर गोइंग टू सी दैट हम पर केजी डील कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ मास 1 kg, स्पेसिफिक हीट इज 0.733, आपके पास टेम्परेचर चेंज 85 माइनस 40। सॉल्व करोगे यू विल फाइंड द इंटरनल चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, जिसकी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है अराउंड 32.985 के आसपास। ओके, आप इसे खुद से सॉल्व करो, आपके पास यहाँ पे वेरीफाई कर लेना वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही। यू आर गोइंग टू सी डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी इट विल कम आउट टू बी एज दिस वन हियर। ओके, सो अगर मैं फर्स्ट लॉ को अप्लाई करता हूं, यू आर गोइंग टू सी Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q की वैल्यू गिवन है 201.3, डेल्टा U आपके पास दे रखा है 32.985, W आपको निकालना है। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करोगे यू आर गोइंग टू सी द आंसर इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 168 समथिंग हियर। तो थोड़ा ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Option number C is going to be the correct answer in this case here. Okay. Next part आपके पास अब यहाँ पे, चलो, enthalpies for the different state point are marked in the figure below for a steam power plant. हर एक पॉइंट की enthalpies आपको गिवन है यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। If for every kg of steam 50% is being extracted for the process heating here. अगेन प्रोसेस हीटर की बात कर रहे हैं, हमने टरबाइन में से हाफ अमाउंट ऑफ स्टीम को निकाल लिया, किस पर्पस के लिए? आपके पास इंडस्ट्रियल यूज के लिए, हीट की जो रिक्वायरमेंट है उस पर्पस के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर आपके पास यहाँ पे क्या होगा? हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब क्या हुआ आपके पास? आप ऐसा समझो, ये एक तरह से एफिशिएंसी की ही बात कर रहे हैं कि आपने जो बॉयलर के अंदर टोटल हीट सप्लाइड करी उसमें से कितना पोर्शन आप यूटिलाइज कर पा रहे हो।
तो अब एक चीज खुद सोच के देखो कि आपने जो बॉयलर में हीट सप्लाई करी है क्यूएस अमाउंट ऑफ हीट, इसका कुछ पोर्शन जो है वो टरबाइन में वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है और आपके पास कुछ पोर्शन जो है वो प्रोसेस हीटर में हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मैं आपके पास हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर की अगर बात करता हूं तो आपके पास इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टरबाइन वर्क प्लस आपके पास प्रोसेस हीट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले अब एक एक करके सब कुछ निकालते हैं। बॉयलर में से आपके पास जो हीट सप्लाई हो रही है वो कितनी स्टीम पास कर रही है। सबसे पहले तो बॉयलर में आपके पास 1 kg ऑफ स्टीम सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास हीट सप्लाइड इन जो बॉयलर है मेरे पास वो है 1 kg मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी चेंज 1 - 8। ये आपको देखने को मिलेगा, जहां पे H1 गिवन है आपके पास 3114.4, H8 की वैल्यू जो गिवन है आपके पास यहाँ पे H8, अच्छा H8 भी हमें गिवन नहीं है ना यहाँ पर। चलो हमें H8 कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले हम H8 को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं जो 1 kg स्टीम यहां से एंटर हुई उसमें से 0.5 kg प्रोसेस हीटिंग में चली गई एंड रिमेनिंग 0.5 kg कंडेंसर में आपके पास फ्लो कर चुकी है यहाँ पर। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास H8 जो है, H8 उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो कि हमारे पास यहां से जो एनर्जी आई प्लस नीचे से जो एनर्जी आ रही, उन दोनों का जो सम है वो है एनर्जी एट 0.8। So it will be equivalent to 0.5 multiply by H7 plus 0.5 multiply by H5 here। ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड फर्दर यू कैन सी H8 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है इट इज इक्वल टू 0.5 H7 647.19 प्लस H5 जो कि है 144.78। यहां से आपको H8 मिल जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको H8 की वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ कि कितनी वैल्यू आपके पास ये आ रही है यहाँ पे। तो H8 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो 395 के आसपास वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, 396। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो ये आ गया आपके पास कि आपने कितनी हीट सप्लाई, कितना आपने यहाँ पे हीट सप्लाई करी। सो हीट सप्लाइड इज कमिंग आउट टू बी, ये आपके पास हीट सप्लाई यहाँ पे हो चुकी है। ओके, दैट इज द हीट सप्लाई। अब इस केस में अगर हम बात करते हैं टरबाइन की, अब एक चीज सोचो, सबसे पहले 1 से लेके 2 तक आपके पास 1 kg ऑफ स्टीम जो है वो आपके पास एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, सो आई कैन राइट कि जो टरबाइन जो वर्क प्रोड्यूस करेगा इट इज इक्विवेलेंट टू H1 माइनस H2 मल्टीप्लाई बाय 1 हियर। ओके, ध्यान रखना। एंड रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे जब आप 0.5 को एक्सट्रैक्ट कर चुके हो, इन दैट केस द रिमेनिंग 0.5 इज एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 to 3 here, so I can write plus 0.5 multiply by H2 minus H3 here। Okay, so that is the total amount of work done which is being produced by the turbine here। अब आपके पास H1, H2, H3 सब कुछ क्वेश्चन में एज इट इज आपको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पे जो टरबाइन वर्क की जो वैल्यू आ रही है दैट इज अराउंड 708 हियर। ओके, अब आप ये सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट प्लस एंड माइनस करना है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, इस पे टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट पार्ट, अब अगर हम बात करें प्रोसेस हीटिंग में, प्रोसेस हीटर में से आप कितनी हीट को यूटिलाइज कर पा रहे हो। सबसे पहले प्रोसेस हीटर में कितना मास जा रहा है,
that is around 0.5 here, multiply by H2 minus H6 here, यही होगा आपके पास, ध्यान रखना। आपको H2 भी गिवन है, आपको H6 भी गिवन है, you can simply calculate the value of the process heater here also, okay, जिसकी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है अराउंड 1050 here, okay, इतना आपको देखने को मिलेगा। So correspondingly I can write कि जो हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर है इट इज इक्वल टू 708 प्लस 1050, टोटल हीट सप्लाइड इज 2718 here. Solve करोगे you will get the value of the heat utilization factor here which will come out to be around 0.6466, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे अगर हम बात करें पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है इट इज मैक्सिमम अराउंड 35 to 40% हियर, स्टीम पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रोसेस हीटर का यूज कर रहे हो तो उसमें आप एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यूटिलाइज कर पा रहे हो फॉर द एक्सटर्नल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हियर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपके पास यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए नहीं मैं करवा रहा हूँ, इट इज नॉट फॉर अ जूनियर इंजीनियर हियर, ओके, दीज आर स्पेसिफिकली गोइंग फॉर द ऑफिसर पोस्ट हियर। In the last two videos, I have covered the question related to the junior engineer only, but in this particular video, I am talking specifically about the officer post here. Okay, and some of the few numerical questions of this particular video can also be asked in the junior engineer post here. Okay, remember that part, in which I have directly used the first law of thermodynamics to solve the problems. Next, efficiency of a Carnot engine is 20%. If the efficiency get doubled when the sink temperature is reduced by 60%, what will be the source temperature here? Okay, so this is a question that can be directly asked in the officer exam here or as well as junior engineer exam also. So in this case, what is given to us, we have been provided with the initial efficiency of 0.2% equal to 1 minus lower temperature by higher temperature here. Okay, now you can see so this is the first equation, or I can further write TL by TH, it is equal to 0.8 here. Okay, now what we have done, now we have double the efficiency here. Now the efficiency is 0.4, but this efficiency has been obtained by reducing the sink temperature by 60 degrees Celsius. तो सिंक टेम्परेचर को अगर आप 60 डिग्री से कम कर रहे हो तब आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी डबल हो जा रही है। सो वी कैन से इन दिस केस 0.4 is equal to 1 minus TL minus 60 divided by TH here. Further, after simplification, I can write TL minus 60 upon TH, it is equivalent to 0.6 here. Okay, so further I can write TL minus 60 is equal to 0.6 into TH here. You are going to see this relation here. Now if I just use the equation number 1 into this particular relation, you can see 0.8 TH minus 60 is equal to 0.6 into TH here. Okay, so how much answer is coming here? 300 Kelvin answer is coming here. Okay, तो ध्यान रखना 300 Kelvin is going to be the correct answer here. So option number C is going to be the correct answer here. So that's a simple question here now. Next part, an engine working on an Otto cycle has a cylinder diameter of 10 centimeter and a stroke length of the 15 centimeter here, and a clearance volume is 196.3 cc. cc simply means centimeter cube here. If the heat supplied is 1600 kilojoule per kg, what will be the net work of this cycle here? Okay, देखो अब आपके पास यहाँ पे clearance volume is given to us. Okay, swept volume we can find out pi by 4 d square into L. Okay, and nothing is given here. So just
Okay, so we were doing the question of this particular part here. So in this case, you can simply calculate the value of the swept volume. और अगर आप swept volume को calculate करते हो, you are going to see it is coming out to be around 1.1781 into 10 to the power minus 3 meter cube here. Okay, ये आंसर आपको देखने को मिलेगा swept volume की वैल्यू का. Okay, and if I just put all these values into the compression ratio formula, you are going to see we are getting a formula of like in this case. Okay, you are going to get the compression ratio of around 7 here. Okay, you are going to get compression ratio of around 7. So अगर एक बार आपको compression ratio मिल जाता है, you can simply calculate the value of the efficiency here. 1 minus 1 upon r to the power gamma minus 1. अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे आप इस वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, तो ये मत सोचना कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, पूछे जा सकते हैं आपके पास यहाँ पर. ठीक है ना, इसका आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक बार अगर आपको एफिशिएंसी मिल जाती है, यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वर्क डन आल्सो. सो इट्स एफिशिएंसी इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 0.54 हियर. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, तो आपके पास वर्क डन क्या होगा इसका, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय हीट सप्लाइड. सो यू कैन सी हीट सप्लाइड कितना दे रखा है आपके पास, 1600 के आसपास दे रखा है यहाँ पे. ओके, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, यू आर गोइंग टू सी द वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 850 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, जस्ट बाय अप्रोक्सीमेशन आई एम टेलिंग यू. सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. ओके, तो आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द थर्मल इंजीनियरिंग पार्ट हियर. ओके, जिसमें हमने काफी सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करे आपके पास, आईसी इंजन, आरएसी, थर्मोडायनामिक्स एज वेल एज द पावर प्लांट. ओके, अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप इस ऑफिसर के लिए जा रहे हो तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द जेईई. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस हियर. अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.